Okay, Nitesh, so let's proceed ahead with your technical snap for ONGC. You're going for finance officer post, right? Yes, So sir. we start with a brief introduction. Uh, so thank you for giving me opportunity to introduce myself. My name is Nitish. I'm residing in Delhi, and I complete my graduation business administration from Sikkim Manipal University, and my cost and management accountant is a professional degree from 2020, and right now does not have any experience in any PSU organization, and thus my academic details. That's all, sir. My academic details that is. Uh, Mm. Thank you, sir. That's Okay, it for. Nitesh, what are you doing presently? Right now, sir, I'm not doing anything. I'm preparing the PSU's exams, and only I'm not doing anything. I'm preparing only PSU exams. Mm. So when did you have done job also in the past? No, sir, I have not done any job because sir my CMA डिग्री 2020 क्वालिफाइड हुआ था उसके बाद से सर मैं पीएसयू की तैयारी कर रहा था क्योंकि सर कोविड चल रहा था उसके बाद से कोई पीएसयू की कोई गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं मेरे को करने के लिए और सर लॉकडाउन समथिंग था तो मैंने पीएसयू की तैयारी करी जैसे ही ओपन हुआ सर एग्जाम वगैरह क्रैक हुआ इसमें इंटरव्यू के लिए है इन हम्म, ओएनजीसी के लिए इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ हम्म। तो आपका ये लॉकडाउन के अंदर भी तो बहुत सा अपॉर्चुनिटी था जॉब करने का, नितेश। हाँ दरअसल सर मेरा जो सीएमए क्वालिफाइड हुआ था मेरा रिजल्ट 29 मार्च 2021 को आया था उसके बाद से सर कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट भी हुआ था सर वहाँ पे मैंने एक दो जगह इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ सर उसके बीच में कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो मतलब एग्जाम कंडक्ट करवा रही पीएसयू के उसके बाद बाद 22 के बाद सर पीएसयू के एग्जाम कंडक्ट हुए तो फिर मैंने देना स्टार्ट किया सर एक दो कंपनी में मेरा आया था मतलब आया ही नहीं था मतलब उसमें कट ऑफ मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था अब ओएनजीसी का एग्जाम हुआ तो उसमें मेरी कट ऑफ आई है सर इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल हूँ राइट Is नाउ this the first PSU you got call from? यस सर Hmm. So Yeah. Nitesh, Hi, yeah. No, Sudhir will take forward. Yeah. hi Nitesh. Where are you from? सर आई एम बिलोंग फ्रॉम दिल्ली Delhi. Your studies has been in Delhi, is it? यस सर Okay. So why you want to join ONGC? So there are few reasons to join the NDC. First of all, is the best PSU for work and is the oil and gas industry में सर ये अपने आप नंबर वन कंपनी है और सर इसका पैकेज अदर कंपनी से मतलब अदर इंडस्ट्री से ज्यादा है अच्छा पैकेज है और सर ये सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉयज को और उनकी फैमिलीज को सर यहाँ पर और सर इसमें वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है वर्किंग इन्वायरमेंट काफी अच्छा है और ये कंपनी इज बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड भी कंपनी को मिला हुआ है और सर इसको कंपनी के अंदर सर जो टेक्निक मतलब जो वर्किंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा है सर देयर आर फ्यू रीजंस जहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ एनजीसी को देयर आर फ्यू Okay. रीजंस सर Okay. So what? So you are a cost accountant, right? यस सर कॉस्ट मैनेजमेंट यस सर So how? What is the difference between the typical cost accountant and the normal chartered accountant? सर बेसिकली मेजर डिफरेंस इज द कॉस्ट अकाउंटेंट का बैकग्राउंड होता है सर कॉस्टिंग के रिगार्डिंग जैसे कॉस्ट ऑफ किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना और कॉस्ट अकाउंटेंट का बेसिकली काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना उसको एनालाइज करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट So मेन डोमेन इसका what अकाउंट are का the होता है कॉस्ट अकाउंट what are the सर typical reports you do as a cost accountant? Sir, cost accounting typically reports are regarding the company's cost, हाँ cost audit reports prepare करने का काम होता है, cost sheet बनाने का काम होता है, product की cost को analyze करने का काम होता है, और मैनेजमेंट को बताने का काम होता है कि ये पर्टिकुलर आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की और ये चीजें इसके अंदर जो जो यूज हुए हैं रॉ मटेरियल्स वगैरह उस चीज के रिगार्डिंग कंपनी को ब्रीफिंग बतानी पड़ती है बताना पड़ता है कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी पड़ती है उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ती है Now, for example, if ONGC you have to do a cost accounting. So what are the parameters you will compare? दरअसल सर ओएनजीसी के केस में सर ओएनजीसी का बेसिकली वर्क होता है सर क्रूड ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करना और तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के जो कॉस्ट आती है रिसर्च की कॉस्ट सर्विंग कॉस्ट उसके बारे में कंपनी को बताना कि कितनी कितनी कॉस्ट है वहाँ पे कैसे कंपनी की कॉस्ट कटी जा सकती है कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि कंपनी का रेवेन्यू गेन हो
क्योंकि मेजर Now, कॉस्ट जो what is the kind of report you would go? For example, you told, right? For example, I'm having a lot of oil refineries, right? यस यस सर So what you will compare? I mean, for example, can you tell a typical report with an example? Like, for example, what report you will give? हाँ दरअसल कंपनी को एक तरीके की सर कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी जिसमें कंपनी की जितने भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, जैसे कि सर्विंग कॉस्ट हो गई, R&D कॉस्ट हो गई एंड अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स वो होती है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को सबमिट करनी होती है, जिसमें कंपनी को ये बताना पड़ता है कि कहाँ का कंपनी के मेजर खर्चे हुए हैं और कैसे उस कंपनी के मेजर खर्चे को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ध्यान में रखिए ताकि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, क्योंकि मेजर खर्चे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, क्योंकि मेजर जो खर्चे होते हैं कंपनी के उनको हम मिनिमाइज करने का काम करते हैं टेक्निक्स के साथ में, कॉस्टिंग की टेक्निक्स जो कि उसको यूज करते हुए। Yeah. So you would तो like to compare across refineries, across years. Would you do that? सर does not, sir I have no information regarding this. Okay, comparing. For example, which refinery is doing better? There are many refineries, right? Yes sir. Each refinery is how the cost is happening, labor cost, how much percentage it is coming. So obviously you would like to compare across refineries, right? So this refinery is doing its labor management better, labor costs are under control, whereas this refinery, the labor costs are going higher side. So typically those are the kinds of reports you would compare and tell them. Or previously you have done better in cost management of labor or cost management of raw materials. So typically that is what a cost accountant would like to, I would like to take analysis from. Is it right, or you differ with that? So can you speak again, sir? I am not understand what you trying to say, sir. What I'm saying is typically a cost accountant, what he does is, so there are many units, right? Refinery units. Each unit has its own profitability. Yes, sir. And cost analysis. So cost analysis in terms of how much labor cost it's doing, how it is doing its raw materials management on different cost aspects. So typically you would do that and say this refinery is doing on this parameter better, this refinery is doing on this parameter, this is where it needs to improve, or this refinery was doing bad earlier, now it is doing better, or it has declined in terms of management of the particular cost. सर इसके रिगार्डिंग सर मैंने ओएनजीसी की जो एनुअल रिपोर्ट थी वहां पर सर इतना एनालिसिस के बारे में किया नहीं था कि कौन सा रिफाइनरी का ज्यादा मतलब No, कॉस्ट refinery है। नहीं, मैं hypothetical question पूछ रहा हूँ, hypothetical question. So ideally, I would like to do that as a cost accountant. Is it true, or you think you differ? You do different kind of analysis? I have no idea regarding this, sir. I'm not thinking. I'm not able to think that, sir. मुझे मतलब थिंकिंग नहीं आ पा रही है कि सर क्या आंसर दूं इसका। Not understand. Okay, that's fine. That's fine. Okay. So Nitish, Yes, so sir. typically, so ONGC has export business also, right? So Are you aware of that? ONGC, कुछ सर मानो. ONGC का बेसिकली जो क्रूड ऑयल का बिजनेस है वो इन हाउस है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा करती है, खपत होती है सर। एक्सपोर्ट सर आई एम नॉट अवेयर दैट कि ओएनजीसी एक्सपोर्ट करती है सर इसके रिगार्डिंग। Okay. So who is the MD of ONGC? हाँ सर अरुण कुमार। What is his background? He is a mechanical engineer. Hello? Can you hear me, Nitish? Yes sir, yes I hear you. Yeah. Sir, he's a mechanical engineer. Okay. Can you see anybody with the cost accounting background in the management of ONGC? No sir. You've gone through it thoroughly? What sir? You've gone through the profiles of board of directors of ONGC.
You are sure that there is no cost accountant in there? Yes, no, sir. Director of Finance, Formula Jaspal is the cost and management accountant. Sir is a gold medalist. Mhm. Yes, sir. Okay, okay. So you know any recent news about ONGC has been in? Recent news. Hmm. I'm not here, sir. No, I'm not here. Recent news regarding the ONGC. Okay, Nitish, that's it from me. My feedback for Okay. you is, so you need to brush up your fundamentals in terms of applicable of cost accounting to ONGC, right? Okay. So basically, Okay. what a cost accountant does is basically he will take the company cost is incurring for any unit, and then Okay. you divide it into different parts. Like labor Okay. cost is this much, raw material cost is this much, overheads is this much, rents is this much, or any of this depreciation is this much, and then you Okay. make a ratios out of it. How much percentage of it is going into the total cost of the company, Okay. right? And then you Okay. would like to ideally achieve a cost which is ideal for different refineries. You will compare across refineries because it has many units. Basically, you would like Yes, to sir. give a competition to each of them to perform better. So Yes. that kind of cost comparison analysis makes the efficiencies for the company. So Okay. it's a very it is a more of analytical job rather than the typical CA job which he does. And then you compare across years also. Okay. So previous compared to previous year, how you are managing, how you are doing better in on this cost parameter, on this profit parameter, and all. So Yes, these are sir. the typical job responsibilities. Because you don't have any experience, you are not understanding this. So Okay. you go in depth into this. You do some searching in the internet. You will get it right. Okay, sir. Cost Uh, analysis for a oil and refinery sector or something like that. So typically they will ask you hypothetical questions. So be ready for that and brush up okay, your sir. fundamentals, right? And also Sir. see all the news related to ONGC recently, Yes, sir. what's been happening, and that is relevant to the finance sector, right? Okay, sir. Yeah. सर एक चीज पूछना था सर आपसे दरअसल सर मेरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डोमेन है तो सर रिगार्डिंग मैं जब अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिग्री के बारे में बताऊंगा तो सर जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो मेरे बैकग्राउंड कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्टिंग हो जाएगा पूछना चालू कर देंगे सर इस ये तरीका क्योंकि सर मैं ना इस तरीके से थिंक कर रहा था क्योंकि मुझे क्या क्या पढ़ना है फाइनेंस डोमेन मुझे समझ नहीं आ रहा था इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है क्योंकि सर मैं अकाउंट्स के वगैरह में बैलेंस शीट परफॉर्मेंस के बारे में मैं पढ़ रहा था कि कितना परफॉर्मेंस इसका अच्छा है कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या रेवेन्यू अर्न कर रही है तो सर इस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ना करूं सर अपने कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेरा डोमेन है उसके रिगार्डिंग में सर की प्रिपरेशन करता चला उसकी डेप्थ नॉलेज में ले लूं सर आप इस तरीके से मुझे सर समझाना चाह रहे हैं So you should have knowledge of first the course in which you have done, right? Primarily, that ओके is what is expected. So if you are, if ओके you, so that is, so they don't expect you to have the knowledge of the courses which you have not done. So primarily they will test your knowledge, and obviously there will be a different job profile for a person coming from CA background and coming from a cost accountant background. Although they might ओके be सर called the same position they might give you, but the job responsibilities would be different, and your knowledge would be applied there. So typically they expect you to answers related to your background. ओके सर So that is the thing. So be well prepared for that. Brush up your fundamentals. See its ओके applicability to companies where you are doing because you have a gap. So you need to ओके सर go. They will go in depth into your knowledge of the subject. ओके सर So that's the thing, Nitish. ओके सर Yeah, all the best. थैंक यू सर Okay, Nitesh. So go for some more, right? Like this. यस सर